Hello friends, myself Rasika Pagaria. Now we are going to start with the new book, that is the Political Science G2, an introduction to political ideologies. Right? In this, see, in this we have syllabus. Like first topic will be on the ideology. In that we'll study origin, meaning, definition, then nature and scope. Then second is the nationalism, that is meaning, definition and elements. Then second point is the progressive and reactionary, then internationalism. Then third point is the democratic socialism, that is meaning, nature, feature, and then achievements and limitations. Now fourth point is the fascism, that is the principal factor responsible for the rise of fascism, and then evaluation. So today we'll begin with the first topic, that is the ideology. फर्स्ट टॉपिक इज दिस द ओरिजिन ऑफ एन आइडियोलॉजी. व्हाट इज, जब ये आइडियोलॉजी सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड इफ यू हियर द वर्ड आइडियोलॉजी? कुछ तो आता होगा दिमाग में. सो इन दिस विल स्टडी द ये आइडियोलॉजी जो है, इट्स ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी, नेचर ऑफ आइडियोलॉजी, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, scope of ideology, end of ideology, political ideologies in 21st century. Introduction. 19th and 20th century witnesses the development of many ideologies such as individualism, liberalism, utilitarianism, socialism, communism, fascism, गांधीज़म etc. See, 19th and 20th century अपन क्या देखते हैं? बहुत सारे आइडियोलॉजीज आए, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म आया, लिबरलिज्म आया, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, ये सब कुछ आया. एवरी कंट्री टुडे फॉलोज वन और द अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. से हर कंट्री क्या करती है? कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी फॉलो करती है. जैसे अपन इंडियंस भी फॉलो द गांधीज्म एंड ऑल, राइट. लिबरलिज्म भी फॉलो, आवर कंट्री फॉलो दिस. तो ऐसे हर कंट्री डिपेंड अपॉन द law, depend upon the citizen, depend upon the government, they follow their own ideology. Many ideologies arise in times of crisis and often a bitter order. बहुत बार क्या होता है, जब क्राइसिस आती है कंट्री में, तो क्या है, बहुत नए नए आइडियोलॉजीज आते हैं. तब क्राइसिस के टाइम में आइडियोलॉजीज आते हैं एंड दे आर अ बिटर ऑर्डर. वो कभी कभी दे कमेंट एज अ दे ऑफर अ बिटर ऑर्डर. कभी कभी वो सारी चीज़ें बहुत बिटर भी हो जाती है. Now, many ideologies arise in the crisis and follow a bitter code. Political ideologies are broadly accepted set of ideas based on the priorities and beliefs of the group they arise from. See, political ideologies क्या है? Are broadly accepted set of ideas. Political ideologies, they are nothing but a broadly accepted एक set of ideas है. Based on certain priority. ये किस पे based है? They are based on certain priorities and beliefs of the group that arise from. वो किसी ग्रुप पे डिपेंड रहते हैं, किसी ग्रुप से इन्फ्लुएंस हुआ रहता है, ऐसा सब चलते रहता है यहाँ पे. They are political constructs, part of the struggle for power within and between societies, and as such they attempt to define how and why political power should be exercised, defined primarily by the priorities, assumptions and agenda of those groups from which they originate. See, they are political construct. See, ये क्या है? ये ideologies, they are nothing but they are the political construct है, जिसके अंदर पावर रहता है. इसके अंदर पावर कैन बी विद इन एंड बिटवीन सोसाइटीज एंड इट कैन ऑल्सो they also define how and why political power has been exercised, how the priority सब कैसे चेंज हुए, एजेंडा क्या है इसका, what are the assumptions from, and ये आइडियोलॉजी किससे आप इंस्पायर हुए हैं, ये सब अपने को पता चलता है. They are filter through which they adherents interpret priorities and potentially dismiss information about the world around them. See, they are filter thought which they adherent interpret. See, ये सारे क्या है? ये थॉट है जो इंटरप्रेट होते हैं प्रायोरिटीज एंड
पोटेंशियली डिसमिस इंफॉर्मेशन, और क्या है बहुत बार सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, उनके आजू बाजू जो दुनिया है उसके बारे में अपने को सब पता चलता है। Then, the core idea of this ideology, however, are always based on assumption which presume superior knowledge or understanding of political society on behalf of the inheritance of the ideology। से यहाँ पे core idea ideologies क्यों आते हैं नए नए, क्योंकि ये सारे किसी assumptions पे based है। इसके अंदर भी कोई तो किसी को तो बहुत knowledge रहेगा उसको, या फिर they have the knowledge of the society, political society, and then they come up with the ideologies। Liberalism is a political and moral philosophy based on liberty and equality। See, liberalism क्या है, ये एक political and moral philosophy है, right? Liberalism is nothing but a political and moral philosophy, and it is based on liberty and equality। Liberal espouses a wide array of viewing depending on their understanding of this principle, but they generally support civil rights, democracy, secularism, gender and race equality। See, what happened here? The liberals espouse a wide array of views। ये liberals जो है इसका है ना बहुत बड़ा व्यू है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स। लाइक ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आए देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट दे जनरली सपोर्ट सिविल राइट्स, डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म में अपन किसको सपोर्ट करते हैं? वी सपोर्ट द सिविल राइट, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जेंडर एंड रेस इक्विटी, internationalism and the freedom of speech, the press, religion and market। से अपन इसमें किसको सपोर्ट करते हैं? वी सपोर्ट द डेमोक्रेसी, वी सपोर्ट द जेंडर, मोर इक्वालिटी, इंटरनेशनलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन प्रेस, रिलीजन एंड मार्केट। हर किसी को यहाँ पे एवरीवन हैज़ अ फ्रीडम टू डू अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश। देन ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी। अभी आइडियोलॉजी आया कहाँ से? अपन ये वर्ड सुन रहे हैं आइडियोलॉजी एंड ऑल, बट वेयर डिड इट कम फ्रॉम? ये ऐसे ही आया क्या किधर से भी? नहीं, कुछ ना कुछ तो रिलेवेंट रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा इसका भी पीछे। सो लेट्स लर्न अबाउट इट्स ओरिजिन। द वर्ड फर्स्ट मेड इट अपीयरेंस इन फ्रांस as ideologies at the time of the French Revolution, when it was introduced by the philosopher A.L.C. Dusty de Tracy as a short name for what he called his science of idea। इतना ही पढ़ते, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो ये पहला आइडियोलॉजी, ये वर्ड कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम द फ्रेंच। एज अ आइडियोलॉजी उस वक्त क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिलोसोफर A.L.C. Dusty de Tracy as a short name for what he called his science of idea। उसने ये शॉर्ट नेम दिया, मतलब उसके जो साइंस के ऊपर जो आइडियाज़ थे उसके ऊपर उसने ये शॉर्ट नेम दिया, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द साइंस ऑफ आइडिया, विच ही क्लेम्ड टू हैव adopted from the epistemology of the philosopher John Locke and Etienne Botton de Corona, for whom all human knowledge was knowledge of idea। See, which he claimed to have adopted। तो क्या बोल रहा है? उसने कहाँ से अडोप्ट किया? फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ द जॉन लॉकी से अडोप्ट किया, एंड बोटन डे कॉन्डेलेसी, इससे जो ह्यूमन नॉलेज के बारे में दे वर वेरी फेमस, एंड उनका ह्यूमन नॉलेज वो ही उनका नॉलेज ऑफ आइडिया था। इट वॉज द नॉलेज ऑफ आइडिया वॉज द ओनली ह्यूमन नॉलेज। द फैक्ट इज हाउएवर दैट he owed rather more to the English philosopher Francis Bacon, whom he reversed no less than did the earlier French philosopher of the Enlightenment। See, the fact is, however, that he owed rather to an English philosopher। वो he was owed to the English philosopher Francis Bacon, whom he reverted no less than the earlier French philosopher of English of the Enlightenment। उसने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया यहाँ पे। इट हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस हियर। It was Bacon who had proclaimed that the necessity of science was not only to enlarge men's knowledge
but also to improve the life of men on earth. See, it was meant for the improve the life of men on earth, but and it was this same union of the programmatic with the intellectual that distinguished Destitute ideology from those theory system or philosophies that were essentially exclamatory. See, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये बोस कौन था, who had proclaimed that the जिसने प्रोक्लेम किया था कि डेस्टिनी ऑफ साइंस क्या था, सिर्फ आदमी ह्यूमन नॉलेज नहीं था, बट ऑल्सो टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मैन ऑन अर्थ, but it is also meant for improving the life of men on earth, and it was the same union of programmatic with the intellectual that distinguished Destitute ideology from those theory system or philosophies that were essentially exclamatory. The science of idea was a science with a mission. It aimed at serving men, even saving them, by ridding their minds of prejudice and preparing them for the Soviet of reason. See, the science of idea was क्या था यहाँ पे, the science of idea was a science with a mission. Like science करो with a some mission. It aims at serving men, even saving them. Like आदमी के लिए काम करो and even try to save the men by उनके माइंड को प्रिपेयर करो हर चीज़ के लिए, और किसी रीज़न से प्रिपेयर करो, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करना है, आप उनको प्रिजुडाइज करो, प्रिपेयर करो फॉर द सोवेत ऑफ रीज़न. Thus, ideology has been from its inception a word with a marked emotive content, though Dusty Datre Persumable had intended it to be a dry technical term. Such was his own passionate attachment to the science of ideas, and such was the high moral worth and purpose he signed to it, that the word ideologist was bound to possess for him a strongly laudatory character. See, such thought, ये क्या है, such was his whole, ये उसका खुद का पैशनेट था टूवर्ड्स द साइंस ऑफ आइडिया, एंड इसी वजह से क्या हो गया, उसका वर्थ पर्पस क्या गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये वर्ड आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे स्ट्रांगली इट केम फॉरवर्ड. एंड इक्वल when Napoleon linked the name of ideology with what he had come to regard as the most detestable element in the revolutionary thought, he invented the same word with all of his feeling of disapprobable and mistrust. See, and equally, ये जब कब हुआ, when नेपोलियन ने क्या किया, he linked the name of ideology with what he had come to regard as the most detestable element in the revolutionary thought. He invented the same word with all his feeling of disapproval and mistrust. Ideology was from this time on to play the doubt role of the term, both laudatory and abusive, not only in French but also in German, English, Italian and all the other language of the world into which it was either translated or translated. See, अब ये टर्म कहाँ कहाँ होने लग गया, आइडियोलॉजी, ये प्ले पहले एक डाउट था, रोल कैसे क्या करेगा, देन ये सिर्फ फ्रेंच में नहीं था बट ऑल्सो इन जर्मन, इंग्लिश, इटालियन और बहुत से लैंग्वेज में था ऑफ द वर्ल्ड इनटू विच इट वाज आइदर ट्रांसलेटेड और ट्रांसलेटेड. सी, concept of ideology. 19th and 20th century witnessed the development of many ideologies such as individualism, liberalism, utilitarianism, socialism, communism, fascism, Gandhism, etc. से अपन ने देखा पहले भी the 19th and 20th century क्या हुआ, it has been developed, बहुत ज़्यादा ideologies आए उस वक्त such as individualism, liberalism, socialism, fascism, Gandhism, etc. Every country today follow one or the other political ideology. See, every country क्या करती है, एक कोई ना कोई तो ideology follow करती है. Many ideologies arise in the time of crisis and often a bitter order. An ideology may be developed by an individual like Mahatma Gandhi, Karl Marx, Benito Mussolini or by a group of thinkers. See, ideology बहुत लोगों ने डेवलप की है, like महात्मा गांधी, कार्ल मैक्स, देन मुसोलिनी और बहुत से बड़े बड़े थिंकर्स ने डेवलप किया है. नाउ टुडे विल स्टडी द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी. राइट, मीनिंग पढ़ सकते हैं, डेफिनेशंस भी देख सकते हैं आज अपन. मीनिंग,
A political ideology is a coherent set of views on political and the role of government. See, a political ideology क्या है? Is a set of views on political and the role of government, consistent over a wide range of issue is the hallmark of the political ideology. See, it consists of a wide range of issue. इसके अंदर क्या है? There are lot of wide range of issue in this as a political ideology. However, given the offer contradictory variable that go into modeling public opinion and political value, there is a reason to question whether American thinker in ideology terms at all. ये जो अमेरिकन थिंकर है ना, हाउएवर अपन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन आ रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज. सो द रीज़न टू क्वेश्चन वेदर अमेरिकन थिंकर इन आइडियोलॉजी टर्म एट ऑल, जो अमेरिकन थिंकर से वो आइडियोलॉजिकल टर्म, इट इज़ इन आइडियोलॉजिकल टर्म और नॉट. द एक्सेप्शन वुड बी द एक्टिविटी इन political parties or in group that espouse specific cause. See, ये जो भी क्या है, it can be as per the political parties or group that espouse specific causes. The term ideology has acquired a fairly meaning. See, term ideology को क्या है, एक meaning मिला proper अच्छे से. Politicians regularly condemns policies that disagree with the ideological meaning, that such policies are dogmatic, prejudiced and blind. Ideologies are seen as closed system beliefs that are intolerant and executive, so that socialists, conservatives, liberal and anarchists are often anxious to deny the ideological character of their thought. See, politicians क्या है, पॉलिटिशियंस रेगुलरली बोलते रहते हैं लाइक दे पॉलिसी को ये डिसएग्री होती है अपनी आइडियोलॉजी के साथ, दिस डजंट फिट इन माय आइडियोलॉजी एंड ऑल. बट मीनिंग क्या रहता है, दैट सच पॉलिसीज, ये जो प्रिजुडाइज थिंकिंग अपन सब जो बना रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ बिलीफ इन आवर माइंड, राइट. एंड इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द कंजर्वेटिव, लिबरल, अनार्ची आर ऑफन एंशियस, और सारे ये सब आइडियोलॉजिकल थॉट है. द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी इज therefore is that segment of the science of idea that determines its subject matter. See, the meaning of ideology is therefore क्या है, it is that segment of the science of idea that determines its subject matter. In other words, any viewpoint that is presented in an inherent language and illogical manner cannot qualify to be called as ideology. See, इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, इन अनदर व्यू, अनदर लैंग्वेज, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके इलॉजिकल मैनर में आप कुछ भी क्वालिफाई करोगे एंड इट शुड बी टर्म्ड एज एन आइडियोलॉजी, तो सॉरी, इट वोंट हैपन. सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज आइडियोलॉजी. आप खुद भी कुछ भी बोलोगे और बोलोगे नहीं ये आइडियोलॉजी ऐसी ऐसी है, तो ऐसा नहीं होता. It must also be noted that immediate after its prevalence, the term ideology was also used in a derogative sense by Napoleon Bonaparte to reduce his political opponent, whom he preferred to call as an ideologues. See, it must be noted that immediate after its prevalence, जब वो उसका prevalence आ गया, यूज़ करने लगे, the term ideology it was used in a derogatory sense of by Napoleon. तो नेपोलियन ने उसको अलग सेंस में यूज़ करना चालू किया और उसके बाद उसने उसको नाम दे दिया आइडियोलॉगस. इसने नेपोलियन ने उसको ये नाम दे दिया. We'll wind up our lecture here today. In next lecture, we'll study the definition, characteristics, the nature of ideology, role and significance of ideology. If you have any doubt, mail me on my mail ID, that is rasika.pagaria@aramedu.in. Thank you.